Hello, dear students. So in this question, you can see this question is from the electrostatic topic, and in this question, it is given to you. The question is asked in 2010 in paper 2. It was question statement क्या कहता है, पहले एक बार देख लेते हैं statement को, फिर उसके बाद हम लोग question को solve करेंगे. Let's see this. So a tiny spherical oil drop carrying a net charge Q is balanced in still air with a vertical uniform electric field of a strength 81 pi by 7 into 10 to the power 5 volt per meter. When the field is switched off, the drop is observed to fall with the vertical velocity, terminal velocity that is given to us. It is 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. और G का वैल्यू यहाँ दिया गया है, और viscosity of air that also given to us here. Then density of the oil is also given, and it is asking that what will be the charge value over there. So यहाँ पे दो सिचुएशन है. एक सिचुएशन जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, when electric field is present. तो जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उस सिचुएशन में ऑयल ड्रॉप जो है वो बैलेंस्ड होता है. किसके कारण से? यहाँ पे फोर्स जो mg लग रहा है, और वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण से इस पे अपोजिट डायरेक्शन में q इंटू ई लगेगा. तो अगर ये बैलेंस्ड है, फोर्सेस यहाँ पे QE और mg बैलेंस्ड है, तो व्हाट डज मीन दैट वी कैन राइट हियर QE is equal to mg. This is one relation we are having, QE is equal to mg. Now the second relation, it is saying you when the electric is not particle is is तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल mg लग रहा होता है, जिसके कारण से ये जो एयर मीडियम में ये ऑब्जेक्ट जो है ट्रेवल कर रहे हैं, और वहां पे ये चीज आपको दे दिया गया है कि विस्कोसिटी है एयर मीडियम का. तो देयर विल बी अ विस्कस फोर्स अप्लाइड बाय द एयर मीडियम, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे स्विच्ड ऑफ कर दिया गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट देयर. So in that situation, you can see if this is charge Q having radius spherical in shape, having radius R, and mg force नीचे की तरफ लग रहा है, जिसके कारण से ये नीचे की तरफ जो है आपको नीचे की तरफ ये मूव करना शुरू होगा. And when it acquires terminal velocity, that v velocity I am assuming here. So एक air drag force लगेगा जो कि मीडियम के कारण से, विस्कोसिटी के कारण से यहाँ पे लग रहा है, opposite to the motion of the spherical. So what happened when the force, this mg and this air drag force will get balanced? By that time this terminal velocity attains. So by that time जो velocity होगा उसी को हम लोग terminal velocity कहेंगे. तो यहाँ पे और टर्मिनल ये जो फोर्स होता है, this we know that it is 6 pi eta r v. R is the radius of this spherical shape. Here it is charged, tiny charge particle, and this v is the terminal velocity. तो इस केस में terminal velocity और radius के टर्म में viscous force जो लगेगा उस spherical shape पे, charge particle पे, वो लगेगा 6 pi eta r v, और mg उसको बैलेंस करेगा. So there is another relation we are having, that it is 6 pi this eta r v is equal to this mg we are having, and mg basis पे हम देखेंगे mg force है. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इसके बाद QE, तो this we can write here P equal to, this will be equal to QE. This is the relation we can acquire over here. तो इसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? Let's have a look here again. Sorry about it, this technical issues that was. Let's see this. So इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं कि 6 pi eta rv जो हमें आया है, 6 pi eta rv को हम लोग किसके बराबर कर सकते हैं? This is what we have the mg in the second case, and mg on the basis of first equation we can write mg is equal to q into e. So here you can find the radius in terms of, so radius यहाँ पे क्या है? This radius right here. This is q divided by, it is QE divided by 6 pi eta and V. जहाँ पे eta क्या है? coefficient of viscosity, और V जो है वो जो terminal velocity acquired है. So it is QE divided by 6 pi eta and then V. So this value we can apply here for the radius of the sphere. This is equation 2 I am assuming. Now we are actually looking for finding the charge value. चार्ज वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को जो
तो यहाँ पे आप देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है, mg इज इक्वल टू q इंटू ई। दिस फ्रॉम हियर वी कैन से m को हम लोग अगर लिखना चाहें तो दिस m वी कैन राइट इट इज qe by g। This we can write here qe by g, and this m also can be written in terms of if this sphere is there, यहाँ पे sphere का radius r है, तो m अगर हम लिखना चाहें तो we can write in terms of this density of this spherical charge particle here. So density, if I assume here d, and then multiplied by 4 by 3 by r cube. If we multiply density with the volume, we get the mass of this spherical. So इस mass को हम लोग यहाँ से इसके बदले में हम लोग इसको use करेंगे. So this we can use here. It is 4 pi by here it is 4 pi by 3, and d is the density of the charge particle. So d by यहाँ पे this d we are having, and इसके बाद जो है 4 by 3 pi d, and then we have r cube. So you can see here it is r. Now we are looking for finding the charge value. So यहाँ से r का वैल्यू जो है होगा, तो r का वैल्यू जो हमने इक्वेशन 2 में निकाल रखा है, this you can see here qe by 6 pi eta v. This we have to change here it is. So it is 4 by 3 pi d, and this r cube, this r we are having, it is charge q, then electric field cubic format, then we have in denominator it is 6q, then we have pi times of q, then we have eta times of q, then we have terminal velocity times of q. तो ये सारा का सारा टर्म इस साइड जो है हमारे पास q into e by g है, और इस साइड ये है, एंड आवर मेन फोकस इज टू फाइंड द चार्ज। तो चार्ज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चार्ज वाले टर्म की तरफ रखेंगे एंड द अदर टर्म की इन राइट साइड। तो चार्ज वाले टर्म को अगर हम एक साइड रखते हैं, क्योंकि हमें चार्ज निकालना है यहाँ पे 4 by 3 pi d q इलेक्ट्रिक फील्ड q डिवाइड बाय 6q pi q eta q एंड v q। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है ये सारे इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया है, और 6 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ईटा का वैल्यू भी दिया गया, टर्मिनल वेलोसिटी दिया गया, एंड हियर वन पार्टिकल you can see here this particle, what we can do is we can eliminate this particle, here it will be e square। तो एक q का वैल्यू भी यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फ्रॉम हियर आई एम राइटिंग व्हाट इज द q वैल्यू, इट विल बी you can see here this side we have it is 6q, then pi q, then eta q, then it is v q। ये सारा टर्म जो है न्यूमरेटर में चला गया यहाँ पे, और 6q pi q eta q v q, और यहाँ 3v है, 3v जाएगा न्यूमरेटर में, तो 3v जाएगा, और ऊपर में जो टर्म है इसमें आपको वो है 4 pi d, तो डिनोमिनेटर फैक्टर में ये चला आएगा। This is 4 pi, and then we have dt, the density of the density of the particle is. So here you can see this d it is, and then 4 pi d, and here we have q square it is, so q square this is, and e square multiplied by e square. If you multiply e square, this 4 pi d q square e square, q square I took in this way, and the denominator segment here we have g also, so g will be multiplied here. This is what I think it is now okay, that 4 pi d, so 4 pi d, then e square, then g will be multiplied in the denominator segment, and the numerator segment we have 6q pi q, then q p q, and p q, and e is cancelled already. So the result here, what if we put this power to here, and in the next step we'll getting like this is 6q, we have 216, then pi q here it is there's 1 pi is getting cancelled out, then pi square, so it will be pi square, then eta value we have eta q, then v value we have v q, and then 3, and then divided by 4 d, 4 into d, then e square, so 4 into d density here, and e square electric field is also mentioned here, that in terms of, and then g value. So once we substitute the all value here, we'll get the charge value. Is now it is question of calculation. So you can see all information is given. Electric field is 81 pi by 710 to the power 5. It is given in SI unit. Then this volt, this terminal velocity is also in SI unit here. Density of the oil, which is in a spherical shape, we have 900 kg. So this is also in SI unit.
Then viscosity of air, it is also given you in SI unit, and G value is 9.8. So the value it is given to you. So once you substitute all the information here, we'll be getting the result. So let's have a look that how much approx value we will getting, and then the basis of that we can calculate. The final result here it is. So this is what we are having. This is 216 into pi square. I'm keeping here because in pi square we have coefficient of viscosity. It is so the coefficient of viscosity is given. This value is you can see here the value. It is 1.8 into 10 to the power minus 5. So it is 1.8 into 10 to the power minus 5 and cube of it. So cube of it. Then the terminal velocity of also over there. So terminal velocity is 2 into 10 to the power minus 3. So here it is 2 into 10 to the power minus 3, and then cube of it multiplied by 3, and then divided by the 4 into density of the what we can say oil. So density is 900. It is given to electric field. It is given here 81 pi by 7 into 10 to the power 5. So it is 81 pi by 7 into 10 to the power of 5, then square of it, because electric field square we are having, and the G value is 9.8. Once you substitute the value and get calculation over there, because this is just calculation only, we will get the result on the basis of. So I'm just leaving this kind of result you can go with, and what will be the result that will put in the value part. So this is what you should keep in mind, that when the question is coming, this question was having two concepts to apply. One concept was when electric field was there. तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक जो अर्थ का फोर्स लग रहा था एमजी, वो दो फोर्स लगने के कारण से उनको आपको बैलेंस करके वहां से एक रिलेशन हमें मिल रहा था एमजी का, जो कि क्यूई के बराबर होगा. जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया है, उस केस में क्या होगा कि ओनली एमजी के कारण से एमजी जो है पुल करना शुरू करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि एमजी पुल करेगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे एयर मीडियम है, एयर मीडियम के कारण से वहां पे एक विस्कस फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, जो कि स्पीड जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, सो दैट कि उसके स्पीड को वो कम कर सके. और धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि जो फोर्स एमजी लग रहा है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा एक्वायर्ड होगा जिसमें कि एमजी फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाए विस्कस फोर्स से. तो उस केस पे जो उस टाइम पे जो स्पीड होगा उसको हम लोग क्रिटिकल स्पीड बोलेंगे, और वो स्पीड हमें दिया हुआ था. तो यहाँ से, और दूसरा विस्कस फोर्स का इस चैप्टर में क्वेश्चन में, तो दैट इज व्हाई इट इज एडवांस लेवल दैट. तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर का एक एप्लीकेशन आ गया था जो विस्कोसिटी का था, और उसके बेसिस पे उसके बाद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, just only calculation है. You can see this is just calculation only, and after that you can get the result. I hope this is clear. Thank you.